very good morning, everyone. I welcome you all for the next part of effects of electric current. So, in the last session, already we discussed construction and the working principle of electric motor with the help of a level diagram. So now, today in this session, we will be discuss on Faraday's law of induction, electromagnetic induction, and what is meant by induced current, how it is produced in the coil, Fleming's right-hand rule, and construction and the working principle of इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे what is the meaning of induced current, how it is produced, Fleming लेफ्ट हैंड रूल, और लास्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ electrical generator with the help of a label diagram. So start today's session. Electromagnetic induction means, what is the meaning of electromagnetic induction? So electromagnetic induction or a Faraday's law of induction was discovered by Michael Faraday in 1831. तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या है डिस्कवर किया है, कब बोले तो 1831 में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और Faraday's law of induction discovered by Michael Faraday in 1831. So now, what is the meaning of electromagnetic induction? So electromagnetic induction क्या है ये हमें जान लेना है. The process, it is one of process. It is a process by which changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called as the electromagnetic induction. So it is a process in which after changing the magnetic field in a conductor, current is induces in another conductor is called as the electromagnetic induction. तो ये क्या है प्रोसेस है. इस प्रोसेस में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद कंडक्टर में क्या होता है इंड्यूस्ड करंट क्या है प्रोड्यूस होता है, इसको हमें कहना है मैग्नेटिक इंडक्शन. द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर is called as a electromagnetic induction. After changing the magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called as a electromagnetic induction. A current can be induced in a conductor either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field. Now see. A current can be induced in a conductor either by moving it in a magnetic field. When the conductor is moving in a magnetic field, it induces a current. जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है मूव करता है तो क्या हो तो इंड्यूस्ड करंट क्या है उसमें क्या है रेडी हो जाता है या और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. So the induced current produced in a conductor is mainly depending upon the two factors. If the conductor is moving in a magnetic field, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोड्यूस करता है तो इंड्यूस्ड करंट क्या है प्रोड्यूस होता है, या मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर के राउंड में है वो चेंज करने के बाद क्या होता है इंड्यूस्ड करंट क्या है प्रोड्यूस होता है. Understand? So a current can be induced in a conductor either by moving it in a magnetic field. When conductor moving it in a magnetic field, so induced current is produced. So current is induced in the conductor or by the changing the magnetic field. या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बाद या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में राउंड करने के बाद क्या बोलो तो उसमें इंड्यूस्ड करंट क्या है प्रोड्यूस हो जाता है. अंडरस्टैंड? इट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या Faraday's law of induction. State Faraday's law of induction. आपको क्वेश्चन पूछा सकता है
तब क्या बोलना है, Faraday's law of induction is the process. So in this process, changing magnetic field in a conductor induces a current. When the magnetic field of a conductor changes, it induces a current in another conductor is called as the electromagnetic induction, या Faraday's law of induction. So this law is depending upon the two factors. One is if the conductor is moving in a magnetic field or by a magnetic field changes, then the induced current is produced in the conductor. Listen, this is the electromagnetic induction or Faraday's law of induction. Now see, so what is the meaning of induced current? Now see, what is the meaning of induced current? Now see, so next one, induced current. Next one आप पढ़ेंगे induced current. So what is the meaning of induced current? Now see, the current produced in the coil is called as the induced current. Now see, जो हमारे coil में करंट प्रोड्यूस होता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो इंड्यूस्ड करंट कहना है. Whenever the magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil. This is known as the Faraday's law of induction. The current, जब करंट coil में प्रोड्यूस होता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो इंड्यूस्ड करंट कहना है. The current produced in the coil is called as the induced current. हमने अभी भी फैराडे के लॉज में पढ़ा था, जब कंडक्टर रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जब उसमें जो करंट रेडी होता है उसको हमें क्या कहना है तो इंड्यूस्ड करंट कहना है. द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट. नाउ सी, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल is called the induced current. Is called the induced current. Listen. So what is the meaning of induced current and the electromagnetic induction? Now next concept is Fleming's right hand rule. Now see, in the last session already we discussed Fleming's left hand rule. Now we discuss about the Fleming right hand rule. अब हम क्या है Fleming का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमने डिस्कशन किए सो है पिछले वीडियो में. Now we discuss about the Fleming right hand rule. Now see, Fleming right hand rule. Now see, Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Right hand rule. So what is the main role of Fleming right hand rule? Now why it is necessary? Now see, so it is used to find the direction of induced current produced in the coil. What is the main role and the main use of Fleming's right hand rule? It is very useful for finding the direction of induced current that is produced in the coil. जब coil में induced current प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलते हो इस लॉ को क्या है यूज करते हैं. इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current. Find the direction of induced current. So already we know that the current produced in the coil is called as the
induce the current. Now, Fleming right hand rule is a very useful for to find out the direction of a induced current that is present produced in the coil. जो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल को क्या हो तो यूज किया जाता है. नाउ सी when will the induced current in the electrical conductor coil be maximum? It will be maximum when the direction of the motion of the electric conductor is perpendicular to the magnetic field. Now see, when the induced current is maximum in the conductor, कंडक्टर में ज्यादा इंड्यूस्ड करंट कब होता है ध्यान में रखो, when the direction of motion of the electric conductor is perpendicular to the magnetic field. When the direction of motion of the electrical conductor is proportional to the magnetic field, at that time the induced current is maximum in the conductor. कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम कब होता है? When the direction of motion of electric conductor is perpendicular to the magnetic field. At that time, the induced current in a conductor is maximum. तो एक कंडक्टर में मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट कब आता है? जब उस कंडक्टर का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है परपेंडिकुलर रहता है, तब उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट क्या हो तो मैक्सिमम रहता है. The large amount of induced current in a conductor is depending upon the direction of motion of a conductor, so perpendicular to the magnetic field. Understand? So in order to show the direction of the induced current, so in order to show the direction of the induced current, मालूम हुआ induced current कब मैक्सिमम रहता है? जब कंडक्टर का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. उसका मोशन का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को जब परपेंडिकुलर रहेगा तभी एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट क्या हो तो ज्यादा रहता है. नाउ स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. Already we know that what is the use of Fleming right hand rule. So this rule is used for the finding the direction of induced current. Now see, Fleming's right hand rule is a very useful. Stays the thumb, the index finger and the middle finger in such way that they will be perpendicular to each other. Now see, stage your right hand thumb, index finger and the middle finger so as to perpendicular to each other. Understand? In such a way that they will be perpendicular to each other. ये अपना right hand है, this is thumb, this is the index finger, this is the middle finger. So according to the Fleming left hand rule, the thumb, stage finger and the middle finger in such a way that they will be perpendicular to each other. हमें इसको इस तरह से फैलाना है कि तीनों फिंगर क्या बोले तो एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर रहना है. Stays the thumb, index finger and the middle finger in such way that they will perpendicular to each other. Understand? Now see, the thumb indicates the motion of the conductor. Thumb shows the motion of the conductor, and next the index finger is the direction of the magnetic field. So index finger shows the direction of a magnetic field and the middle finger shows the direction of a induced current. Now see, so thumb shows the motion of a conductor. Stage अपना जो ये है index finger shows the magnetic field. यानी क्या दिखाता है? Index finger shows the magnetic field and middle finger shows the direction of a induced current. Understand? This is the Fleming right hand rule. According to the Fleming right hand rule, stage your right hand thumb, index finger and the middle finger so as to perpendicular to each other. हमारा जो right hand है, right hand की जो तीन फिंगर है, thumb, index finger और middle finger, इन तीनों को हमें इस तरह से फैलाना है, ये तीनों क्या हो तो
एक दूसरे को क्या रहना है, परपेंडिकुलर रहना है। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब indicates the direction of motion of a conductor. Stage finger indicates the direction of a magnetic field. Middle finger indicates the direction of a induced current. Understand? Thumb indicates the direction of motion of a conductor. Index finger, हमारा जो index finger है, index finger indicates the direction of a magnetic field. Middle finger indicates the direction of a induced current produced in the conductor. This is the Fleming right hand rule. ये अपना Fleming का क्या बोलो तो right hand rule. Understand? Now see, with the help of a diagram इसको हम understand कर सकते हैं. Now see, this is our thumb. ये अपना क्या कंसिडर कीजिए, this is our thumb. तो thumb किस डायरेक्शन में रहेगा? Thumb indicates the direction of motion of conductor. Thumb क्या रहेगा? Direction of motion of conductor. Direction of motion of conductor. Now see, let's now see index finger, direction of magnetic field. ये अपना क्या रहेगा? Index finger direction of magnetic field, direction of magnetic field. And now see middle finger direction of induced current, direction of induced current. ध्यान में रखिए, इंड्यूस्ड करंट को कंफ्यूज मत करिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड करंट? जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है तब उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट्स क्या है, प्रोड्यूस होते हैं. या जो मैग्नेट के राउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं, जब हम उसको चेंज करते हैं तब इंड्यूस्ड करंट उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये अपना थंब है. थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. हमारा जो इंडेक्स फिंगर रहेगा वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड करंट. सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल इन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ एसी जनरेटर. जब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो इसमें यही स्टेटमेंट हमें क्या होता है, बहुत क्या है, यूजफुल होने वाली है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन कांसेप्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर. एसी जनरेटर जिसको हम कहते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर. Construction and the working principle of electric generator. Now we discuss about the construction and the working principle of electric generator with the help of label diagram. With the help of label diagram, explain the construction and working principle of electric generator. Now see, electric generator. Electric generator. So we know that electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. ध्यान में रखिए. So electric generator is a device. Electric generator is a device
which converts mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy into electrical energy. Into electrical energy. Listen. So electrical generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Now see, so electrical generator converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current. In the form of alternating current. In the form of alternating current. In the form of alternating current is called AC generator. Is called AC generator. Now see, electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current is called as a AC generator. उसको हमें क्या कहना है तो AC generator कहना है. Now next one see, so people starting construction and the working principle you know that on which principle electrical generator work. कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर वो क्या करता है, वर्क करता है, ये हमें देख लेना बहुत जरूरी है. So on which principle electric generator या इलेक्ट्रिक AC जनरेटर वर्क्स. तो अपना जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर क्या है वर्क करता है. On which principle electric generator works. Principle of working. Principle of working. Now see, electric generator works on the principle of electromagnetic induction or a Faraday's law of induction. Now see, so electric generator works on the principle of electromagnetic induction or a Faraday's law of induction. हमारा जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रिकल generators works on the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. किसके ऊपर वर्क करेगा बोलो तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction और Faraday's law of induction. Faraday's law of induction. Listen. Now let's start the construction of electrical generator. So with the help of a label diagram, first draw the label diagram of electrical generator and afterwards start the construction. Now see, first draw the label diagram of electrical generator. Now see, first draw the rectangular loop of a copper wire with resistive coating. So how draw the diagram? Diagram में कुछ पार्ट्स को कब ड्रॉ करना है ये हमें ध्यान में रख लेना है. Now see, इलेक्ट्रिक जनरेटर या AC जनरेटर electrical generator. Now see, first draw the rectangular loop of copper wire with resistive coating. First हमें क्या ड्रॉ करना है, rectangular loop of copper wire
This is the rectangular loop of a copper wire. Now, so give the name of branches A, B, C and D. There are 4 branches of a rectangular loop of a copper wire. So after this now, draw the magnets. हमें क्या करना है, मैग्नेट्स को क्या है ड्रॉ करना है. दिस वन इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट and this one is a south pole of a magnet. So afterwards now we draw the axle. हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्सल को ड्रॉ करना है. This is the axle. You draw the 2 split ring. यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 split rings को ड्रॉ करना है. टू स्प्लिट रिंग्स. यहाँ पर उसको कार्बन ब्रश रहेंगे. The carbon brushes. This one is R1, first split ring. This one is R2, second split. This one is a B1 is a carbon brush. The B1 carbon brush रहेगा. Now connect with the connecting wire to the battery. सॉरी गैल्वेनोमीटर. तो हमें क्या कनेक्टिंग वायर के साथ उसको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लेना है. B2 carbon brushes. This one is a B1 carbon brushes. Understand? Now write the names. Carbon brushes, split rings. Now C is the galvanometer. This one is an armature coil. Armature coil. You can also. So this is the label diagram of electrical generator. So people starting construction, we understand. So which components are used in the construction for a electrical generator? So this one is a rectangular loop of a copper wire with a resistive coating is called as the armature coil. Understand? And there is a strong magnet. One is the north pole and the south pole of a strong magnet. The magnetic force are transferred from a north pole to the south pole. And next one, B1 and B2 are the 2 carbon brushes. R1 and R2 are the 2 split rings, and one is a galvanometer. So one is a galvanometer. So this is the label diagram of a electrical generator. Okay, stop here. The construction and the working principle of a electrical generator will be discussed in the next class. Yeah, next session में हम उसके बारे में क्या है discussion कर देंगे. So in this session we discuss what is meant by electromagnetic induction, what is the meaning of induced current, and state the Fleming's right hand rule.
Okay, we'll stop here. We will continue on the next session.